जेम्स क्यू विल्सन का काम मोरालिटी पे और मॉरल इश्यूज पे या मॉरल इम्प्लीकेशंस पे बहुत ही अहम है। ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी काम था। उनकी ये किताब बहुत ही फेमस और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। उस पर कुछ कंट्रोवर्सीज भी रेज हुई हैं, कुछ लोगों ने एतराज़ भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स और पॉलिसी स्कॉलर्स इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि सिर्फ पॉलिसीज़ के साथ सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। सोसाइटीज़ में अपने मैकेनिज़म्स होते हैं, कल्चर के मैकेनिज़म्स होते हैं, मोरालिटी के मैकेनिज़म्स होते हैं जो सोसाइटीज़ को अच्छा बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट के एक्शन की लिमिटेशंस हैं और उनको समझना चाहिए। तो ये काम उनका बहुत ही अहम है। ये किताब बहुत पढ़ी जाती है, बहुत पॉपुलर है और कंट्रोवर्शियल भी है इन सम सर्कल्स। आप ये देखेंगे कि बहुत सारे पॉलिसी साइंटिस्ट्स दे डोंट टॉक अबाउट मोरालिटी और मोरल इश्यूज और मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ पब्लिक पॉलिसीज और मोरल मैकेनिज्म्स ऑफ डीलिंग विद द सोशल प्रॉब्लम्स। तो James Q. Wilson, being a conservative, old-fashioned conservative, he defended morality against modern skepticism and बहुत सारा ऑब्जेक्शन जो रेज किया जाता है मॉरल आर्ग्यूमेंट पे, वो ये है कि मॉरल्स की कोई रैशनल या लॉजिकल बेसिस नहीं है या साइंटिफिक बेसिस नहीं है, एंड मॉरल्स आर आर्बिट्रेरी, morals are decided by power, and they are traditional things, so they have no place in a scientific modern society. इस किस्म के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं। इनको एड्रेस किया है इस किताब में जेम्स क्यू विल्सन ने, और उनका ये ख्याल है कि ये बहुत सारे लोग वर्च्यू के फियर का शिकार हैं। पीपल थिंक मे बी वर्च्यू इज़ नॉट अ गुड थिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट वर्च्यू, पीपल और सम पीपल स्टार्ट टू थिंक अबाउट द ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो ये फियर जो लोगों में है वर्च्यू के बारे में, दैट इटसेल्फ इज़ irrational, and they may have no true basis to defend. उनका ये रिस्पांस था इस किताब में। उन्होंने इन फियर्स को स्टडी किया और मॉरल आर्ग्यूमेंट पे जो ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं लोगों की तरफ से, उनको स्टडी किया। एंड his argument was that evolutionary psychology and moral sentiment theories of Scottish philosophers had a lot to support the moral sense of human beings, or they provided the space for the moral argument. He cited Francis Hutcheson, David Hume, Adam Smith to uh, establish the significance of the moral sense of man. तो ये काफ़ी एवोल्यूशनरी रिसर्च करके जेम्स क्यू विल्सन ने ये इस्टेब्लिश किया कि ह्यूमन बीइंग्स हैड मोरल नेचर, moral principles or morality was not arbitrary, it was not traditional, it was not superstition, but it was embedded in the nature of human beings. चार किस्म के moral responses या moral senses जेम्स क्यू विल्सन ने गिनवाए हैं इस किताब में, which is very interesting. The first moral sense which human beings share across the world is the sense of sympathy with others, sympathizing others' situation and feeling the problems of others. The second moral sense which human beings possess is the sense of fairness. Human beings want to be fair and want fair treatment no matter where they live because it is embedded in their nature. Self-control is an important moral sense which human beings share, which human beings have learned through the evolution and have adopted it. The sense of duty is also a very important moral sense which James Q. Wilson thinks human beings possess everywhere, wherever you go. So, this argument is closer to the communitarianism, which was proposed by Amitai Etzioni and is being propagated by
many other people that human beings have some moral obligations or moral senses, and that's why they live in communities. And it is better if they live in communities. It is better if communities have primacy over individuals. इनके इस किताब में और एक दो पॉलिसी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ की क्रिटिक डेवलप की है with reference to the concepts of morality. लेकिन इन्होंने भी enlightenment के इस belief को that individuals are everything, individuals are supreme and individual rights are trumps, यानी individual rights की मदद से आप सोसाइटी को वीटो कर सकते हैं, कम्युनिटी को वीटो कर सकते हैं, किसी सूरत में इंडिविजुअल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता, नो मैटर कितनी यूटिलिटी हो उन चीज़ों की. बट इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ डिस्टर्ब्ड बाय द कम्युनिटी, द इंडिविजुअल राइट्स वुड स्टे सुप्रीम. तो इन आइडिया की क्रिटिसिज्म उन्होंने डेवलप की एनलाइटनमेंट की थॉट में. एंड इस आइडिया की कि पीपल आर ओनली बाउंड टुगेदर by choices, contracts, and entitlements. He negated these ideas and said human beings are bound together by moral sense, by these four moral senses. And I think if you read this book as a policy student and want to find solutions to the wicked social problems, you will see that his ideas are important in shaping responses to or effective responses to the problems we are facing in Pakistan, the problems of delinquency, the problems of violence, the problems of conflicts and tensions based on caste, creed, sect, and ethnicity. So, his ideas are important in developing responses from within the society to deal with these problems. Maybe public action or the action of government alone cannot help us solve these problems. That's why it is important for you as public policy students to read this book, The Moral Sense by James Q. Wilson.